स्टार्ट करूया पॉइंट. लिनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. तो सिंपल कॉन्सेप्ट है. हॅलो सर. हा बोला. सर तुम्ही ते सॅम्पल एमसीक्यू पाठवा ना या चॅप्टर मध्ये, म्हणजे आयडिया येईल कसं हा एमसीक्यू. आज काय करूया आपण, नेक्स्ट लेक्चरला आपण डिस्कस करणार आहोत ते त्यावेळेस पाठवतो. ओके, जो एमसीक्यू टेस्ट होने वाली जो है ना, मैं कल आपको हम कल हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू. ओके, आज तो हम कंप्लीट करते ये पॉइंट कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम कल से 2 दिन एमसीक्यू हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. चैप्टर टेस्ट की जो एमसीक्यू है यहाँ तक की, और हम सब डिस्कस करेंगे और मैं वो आपको भेज भी दूंगा. लिनियरली डिपेंडेंट सर एंड डेट इंडिपेंडेंट. काय झालं? तारीख कशाची तारीख टेस्ट सांगितली ना? 2 तारीख. 2 तारखेला टेस्ट असेल आणि 2 तारखेला टेस्ट असेल ते 10 वाजता टेस्ट असेल सकाळी. 2 तारखेला 20 मार्काची टेस्ट असेल आणि सिलेबस आहे तो इथंपर्यंत. आज जो आपला होईल ना, आज टोटल डे मध्ये जेवढं होईल तेवढं काय असेल, सिलेबस असेल टेस्टसाठी. Okay, write down linearly dependent and independent. In bracket LD and LI. LD and LI means linearly dependent and linearly independent. Okay. इसमें फर्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स है. लिनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में जो फर्स्ट पॉइंट है वो फैक्टर है. वेक्टर की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए. ओके, तो वेक्टर की डेफिनेशन देखो क्या है. रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स. A row and column रो और कॉलम मैट्रिक्स मेरे साथ आप भी लिखो. नोट्स जब लिखते हो ना आप, तो मेरे साथ लिखो नोट्स जो कोई भी हो. A row and column matrix is called a factor. ओके, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स इज कॉल्ड फैक्टर. फैक्टर किसे कहते हैं हम? रो, अगर सिर्फ ओनली रो मैट्रिक्स है और ओनली कॉलम मैट्रिक्स है तो उसे हम क्या कहेंगे? फैक्टर. ओके, तो इसमें फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू, रो मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 और 3. ये क्या होगा? रो मैट्रिक्स. और सपोज कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए बी इज इक्वल टू 3 4 5. तो ए क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए, फैक्टर ए एंड बी. फैक्टर समझ में आया क्या है? किसी कहते हैं फैक्टर सिंपल. अगर ओनली रो है और ओनली कॉलम है तो उसे हम क्या कहेंगे? फैक्टर कहेंगे. ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन है लिनियरली डिपेंडेंट. सब क्या करना है? लेट x1 कैपिटल x2 कैपिटल x3 and so on xn are the given vectors, are the given vectors. Let x1 x2 x3 up to xn are the given vectors and k1 k2 k3 and so on ken are constants
in bracket scalars, and the relation and the relation k1 x1 plus k2 x2 plus k3 x3 plus and so on plus kn xn is equal to 0 is equal to 0 k1 x1 plus k2 x2 plus k3 x3 plus and so on kn xn is equal to 0. The factor now डायरेक्ट दोन्ही पण डेफिनेशन आपण घेऊया. नाव द factor are called, factors means x1 x2 are called linearly dependent if at least one k at least one k is not equal to 0. At least 1k is not equal to 0. फर्स्ट काय लिनियरली डिपेंडेंटची डेफिनेशन, let x1 x2 x3 up to xn is equal are the given factors. Okay, और एक क्या करना है हमें, x1 x2 x3 आर द फॅक्टर्स गिवन फॅक्टर्स. फॅक्टर्स मीन्स काय असणार आहे, एक तर रो मॅट्रिक्स असेल किंवा कॉलम मॅट्रिक्स, ये गिवन x1 x2 x3 x2 अप टू xn, ये क्या होंगे, फॅक्टर्स होंगे. एंड k1 k2 k3 अप टू kn आर कांस्टेंट्स. एनी कांस्टेंट कंसीडर करते हैं अपन. ओके, इन ब्रैकेट स्केलर्स आल्सो. And the relation k1 x1 plus k2 x2 plus k3 x3 plus and so on kn xn is equal to 0. This is the linear combination of constant and factors. आपण combination घेतलं. Now the factor are called linearly dependent. The given vectors x1 x2 x3 are the linearly dependent if at least one k is not equal to 0 out of this k1 to kn. Here we consider the k1 k2 k3 up to kn. At least 1k is not equal to 0. This means if 1k, at least 1k is not equal to 0, then we say that the given vectors are called linearly dependent. सिंपल क्या है इसमें, देखो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं. कौन से फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, x1 टू x2 xn. ओके, उसके बाद इसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, कांस्टेंट्स कंसिडर कर रहे हैं. और इसमें कांस्टेंट है k1 टू kn है. ओके, दोनों का रिलेशन ले लो. रिलेशन क्या लेना है हमें, k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x2 अप टू kn xn. जितने होंगे आप उतने लेंगे ना. और सपोज आपके पास 3k x1 है, x3 है, आपके पास 3 वेक्टर्स है, तो k3 kx3 इज यहाँ तक हम लेंगे. सपोज आपके पास 2 वेक्टर्स है, तो k1 x1 प्लस k2 x2 इनका हम रिलेशन लेंगे. ओके, तो रिलेशन की लेने के बाद सपोज आपको आपके पास इन सब में से एटलीस्ट 1k इज नॉट इक्वल टू 0 है. ओके, एटलीस्ट 1k इज नॉट इक्वल टू 0, तब हम उस वेक्टर को क्या कहेंगे, लिनियरली डिपेंडेंट. और इसमें सिमिलरली इसके बाद जो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, किसको कहेंगे हम लिनियरली इंडिपेंडेंट, ऑल k इज इक्वल टू 0. बघा ह्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, x1 अप टू xn आपण काय करतोय, वेक्टर कन्सिडर करतोय. आणि k1 k2 अप टू kn काय करतोय, कॉन्स्टंट कन्सिडर करतोय. बघा x1 वेक्टर्स जे x मध्ये असतील ते वेक्टर कन्सिडर करतोय, k मध्ये असेल ते कॉन्स्टंट कन्सिडर करतोय, आणि त्यांचं रिलेशन घेतोय आपण. काय रिलेशन घेतोय, तर त्यांचं मल्टिप्लिकेशन घेतो आपण सेपरेट k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 प्लस kn xn इज इक्वल टू 0 घेतलं. ओके, तर याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला, ते सॉल्व्ह केल्यानंतर जो x1 x2 x2 अप टू xn जे फॅक्टर्स आहेत ते लिनियरली डिपेंडेंट कधी असणार आहेत, तर ह्या जे k1 टू kn मध्ये जेवढे k आहेत त्यातला एक तरी k काय पाहिजे, नॉट इक्वल टू 0 पाहिजे, तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, लिनियरली डिपेंडेंट. काय म्हणते बघा मी,
ऍटलिस्ट वन एक के कमीत कमी एक जरी के जर काय असेल नॉट इक्वल टू 0 असेल तर जे गिव्हन वेक्टर असेल त्याला आपण काय म्हणणार लिनियरली डिपेंडेंट आणि जर ऑल के इज इक्वल टू 0 असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार लिनियरली इंडिपेंडेंट सिंपल कंसेप्ट है इसमें अगर ऑल के आपके पास 0 मिल रहे तो इसका लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और अगर एटलीस्ट वन के इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी से दैट द गिवन वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट आए समझ में हो गया कंप्लीट लिख के लिहून घेतलं ना तुम्ही सर्व Yes, sir. हो सर. Yes, sir. okay next similarly next line को लिखो one a short form में similarly the factor are called linearly independent if all k's are 0 remember that is k1 is equal to k2 is equal to k3 is equal to and so on is equal to kn is equal to 0 linearly independent कैसे कहेंगे हम all k is equal to 0 डेफिनेशन साठी विचारू शकतो का the vector are called linearly dependent if and dash 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 असेल हो गया यहाँ तक का हो गया नेक्स्ट नोट लिखो और एमसीक्यू के फर्स्ट नोट है इफ द गिवन वेक्टर्स if the given vectors if the given vectors x1 comma x2 and so on xn are linearly dependent ld का मतलब linearly dependent okay then we can express one vector then we can express one vector into remaining vectors into the remaining vectors as linear combination and linear combination of x1 to xn and constants k1 k2 and so on kn okay what if the given vectors x1 x2 up to xn are linearly dependent then we can express one vector into remaining vectors as linear combination of x of x1 x2 up to xn kn k2 up to kn in bracket that is x1 comma x2 comma x3
are linearly dependent, that implies x1 is equal to x2 plus x3, or x2 x minus x3. 1 minute. K2 K2 x2 plus K3 x3 plus K4 x4 in terms of remaining factors. झालंय. असं मला काय करायचं, जर if x1 x2 up to xn are linearly dependent, then we can express one vector in terms of another vectors, म्हणजे remaining vectors. म्हणजे जर सपोज x1 x2 up to xn are linearly dependent आहेत, तर आपण काय करू शकतो, त्यातला एक तुम्ही कोणतंही कन्सिडर करा, x1 to up to xn आहे. ओके, आता तुम्ही x3 पर्यंत घेतलेला आहे, एक्सपोर्टची काय गरज नाही, x3 पर्यंत घेतलेला आहे. तर आपण काय करू शकतो, एका कोणत्याही x1 बद्दल करू शकता किंवा x2 बद्दल करू शकता किंवा x3 बद्दल कोणत्याही एका वेक्टर मध्ये तुम्ही कन्वर्ट करू शकता रिलेशन. सेकंड, इफ द गिवन वेक्टर्स if the given vectors x1 x2 and so on xn are linearly independent, then there will be no any relation, then there will be no any relation between the given vectors. In the given vectors, if the given vectors are linearly dependent, then we can express one vector in terms of remaining vectors. But in opposite, if the given vectors are linearly independent, then there will be no any relation between the given vectors. त्यामध्ये कोणतेही रिलेशन नसेल. ओके, लिहून घेतले. हो सर. हो सर. Yes. हो सर. हो सर. हा सर. हो सर. हा सर. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है. First write down question. One minute. Examine for linearly independent or dependence or dependence for the following set of vectors. For the following set of vectors, and write down the first example.
Okay, 2 minutes. Write down first example. ओके, एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें रह चुका है फर्स्ट, वो कंप्लीट करते हैं. हे एक्झाम्पल आपण ना नेक्स्ट लेक्चरला घेऊया, कारण थोडंसं एक पॉईंट राहिला माझ्याकडून तुम्हाला घ्यायचा, तो पॉईंट आधी कंप्लीट करूया.